Take a look at this beast. My goodness. They seem so small in the video but in front of something else. I would like to formally welcome you to my YouTube channel. I know, you already know where I am taking you today from my thumbnail. But this trip was really special to me. So why wait? Let me take you to Ranthambore, the first stop on my Rajasthan trip. मैं अपनी जर्नी आगरा से शुरू की थी और रणथंभौर पहुंचने में मुझे ऑलमोस्ट 4.5 hours लगे एंड आई हैव रीच्ड माय होटल अराउंड 11 PM एट नाइट बिकॉज it is a small town and there was little activity anywhere at around 11 PM. So I would definitely recommend you to arrive Ranthambore before night. So before we start our journey, our guide explained about Ranthambore and the zone. So let's hear him out. पार्क के अंदर पार्क पूरा एक नेचुरल कोई से जू टाइप नहीं कभी जाते टाइगर मिल जाए. 2 डायरेक्शन होते टाइगर ढूंढने के, टाइगर के फुटप्रिंट और एक होती वार्निंग कॉल. टाइगर मूव करता जब डीआर मंकी पिकू के चिल्लाते हैं. इसी 2 डायरेक्शन के आधार पर टाइगर के एरिया का आइडिया लगाते हैं टाइगर किस एरिया में हो सकता है. उस एरिया का वाटर फ्रंट चेक करते हैं, वेट करते हैं, टाइगर मूवमेंट करते हैं तो अपन देख सकते हैं. 70+ टाइगर कोई नहीं ग्रुप में हो एक जगह. 15-20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक टाइगर रहता है, दूसरे को नहीं आने देता. तो अपन टेक नंबर 3 है, उसमें 2 टाइगर है, एक मेल और एक फीमेल. मेल गणेश है और फीमेल है रिद्धि नाम की. नाम कौन दिया इसको? हैं? नाम कौन दिया इसको? हम ही रख देते नाम तो. It always occurs to me when I enter the games park that these areas are governed by and a part of the animal kingdom. And we humans are outsiders here. It's another world. And shortly after we enter the park, the stunning sunrise and the numerous deer welcome us. When we entered Zone 3, a world of dense forest and hidden eyes, I felt exactly the same way. Except for occasional shriek of a cheetal or monkey, there was silence everywhere. A warning that the Royal Bengal tigers, kings of this kingdom, were out looking for a prey. So when first I decided to go, I spent a lot of time on internet looking for good information about how to book a safari, where to stay, things to do in Ranthambore. Either the information was outdated or generic. And I and my friends went to Ranthambore without much information. So therefore I will discuss everything about Ranthambore in my video in this episode. Other than the tiger, you will be able to see sambar deer, cheetal, nilgai, black box, Indian flying foxes and mini crocodiles. As our search for tiger continued, we met other safari riders hoping for the same thing. And here, if one driver sees a tiger, he tried to contact other driver about it. If I talk about the timing at Ranthambore National Park, then the morning and afternoon safari rides are offered. You need to get to the former safari booking center in order to board your safari. And they have 2 timings. Morning trip starts from 7 AM to 10:30 AM and evening trip starts from 2:30 PM to 6 PM. While we were waiting in a beautiful location and seeing a snake bird, our tour guide heard a hint of a tiger. Finally. So he drove the Canter faster than we were flying, so we wouldn't miss a glimpse of one. And here he is. We finally saw the beast. I can't even begin to describe how I felt when I saw the tiger. I have seen them in zoo, but it was different to see them in a national park. The
tiger probably got bored with us in a few minutes and went into the jungle. But we were glad that we got to see him. And we hope he does. मेरे जैसे बहुत ट्रैवलर के सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहता है इन माइंड बिफोर दे स्टार्ट देयर जर्नी लाइक when they should go, how can I reach and what can I do. So let me go one by one answering your questions. When they should go. From October to June, tourists are welcome to visit Ranthambore National Park. You can see many tourists attend jungle safari at this time. But April to June is the best time to looking for tigers. Now coming to the मैं साहब हूँ ड्राइवर साहब ही इसने एक कॉल पे गाड़ी टूटे कुछ भी हो स्पीड जाके पॉइंट पे लगा दी अपने राइट टाइम अच्छी फोटोग्राफी वो सब इनाम देके खुश करके देना ड्राइवर साहब को ठीक है ना तो पूरी मेहनत इसी की है हम तो दिमाग लगाया केवल पर भगाने गाड़ी इसी की है चलो Coming to the second question, how can you reach Ranthambore? So the closest airport is to reach Ranthambore National Park is Jaipur International Airport, but the train route is the most convenient means of getting Ranthambore. The national railway station is the closest to Ranthambore National Park is Sawai Madhopur. And if you are coming by road, then Ranthambore National Park is connected to all the major cities and towns. Tourists can easily reach Ranthambore National Park from the cities like Jaipur, Jodhpur, Kota, Delhi, Agra, Mumbai, Ahmedabad. It is very much important to book your zone when you plan your trip to Ranthambore because the park initially had 5 zones. जैसे कि उनका popularity बढ़ा, the remaining 5 were added. कहा जाता है कि जो core zones होता है starts from 1 to 5 and 9, 10. You have highly chances कि आपको tiger यहाँ दिख जाए. And surrounding buffer zones जो होता है that starts from 6 to 8. You can get your zones by your choice if you book your Ranthambore zones and Ranthambore Canter or Jeep Safari by government website. However, if you are going through an agent, then the zones is not under their control. At the time of booking, you will receive the final zone allocation. So it is highly recommended that you book your zone advance if you want to secure your core zone. And one more thing, booking your safari through appropriate website is also crucial because you will be seeing many fake website mentioned. So अगर आप वो fake website के through book करते हो and once you reach your destination, you will come to know that your reservation has not been completed. So therefore, I have mentioned the government booking website in my description box. And finally, we arrived at our hotel for breakfast after completing our morning Canter ride safari in Zone 3. And we stayed at Sundarban Wildlife Home, and I completely adore that location because it was tranquil and the locals welcomed us with open arms. There was greenery everywhere, the room was clean, they have a great swimming pool, and most importantly, the staff provided us a tremendous support. Because Ranthambore is a popular tourist destination, you will be finding a lot of hotels and resorts nearby. But however, I make sure to book a room close to the national park so that it will be easy for you to get up and board your safari vehicle. I got some fresh air before I went on my jeep safari ride at 2:30 p.m. morning. It was a Canter safari and this time it was a jeep safari. So let me talk about the cost per person for an open Canter and jeep safari. So 20-seater open Canter costs around 500 to 600 per person, whereas 6-seater open gypsy costs around 800 to 900 per person. Till my gypsy comes, I thought to have a chit chat with you and tell you
few things about Ranthambore. So morning today I have started my Ranthambore Jeep Safari at around 7 o'clock, and I have started from my hotel at 6:30, and there was a Canter ride. They have come to my hotel and picked us from my hotel itself, and we went for a ride. It was almost, I can say, it was almost 2 hours, and because we have seen the tiger, so it was worth it, and it was pretty cold. I can suggest to come here from November to March, because if at all there will be a rain, it will be not preferable to come whenever it's rainy season. सो बेटर है कि आप समर में या फिर विंटर में आइए। जीप सफारी में हमको 2 घंटे लगे, और ये खुशी की बात थी कि हमको टाइगर दिख गया। बट आई कैन से कि बहुत ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे आपको बहुत गारंटी रहता है कि आपको टाइगर दिख जाएगा, जैसे कि जोन 3 हमने बुक किया था, और अभी हम जा रहे हैं जोन 10 पे। इसके आप अगर कोई भी प्रिफरेबल जोन पे आप बुक करते हो तो बेटर है कि आप जब भी अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो उसी टाइम आप जोन बुक कर दीजिए। सो इट विल बी आपका कंफर्म हो जाएगा, और आपका प्रिफरेबल जोन आपको मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है इसकी, आप अगर आपके हिसाब से आपका जिप्सी पे जाना हो तो आप जिप्सी बुक कीजिए, आपको कैंटर पे जाना हो कैंटर बुक कीजिए। बट देयर आर फ्यू साइट्स वेयर जो फेक साइट्स होते हैं, जैसे कि हम गिर में जब बुक किए थे, इट वाज अ फेक साइट, एंड उसके लिए हम बहुत इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस दैट टाइम। बट हमने जब गिर का एक्सपीरियंस हमको हुआ, उसके बाद हमको रणथंभौर का बुक करने में इट वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बिकॉज वी हैव बुक्ड इट फ्रॉम अ गवर्नमेंट साइट आई गेस, एंड इट वाज अ गवर्नमेंट साइट। एंड यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि जीप ड्राइवर से लेके जो हमको गाइड दिया गया था वो बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही सपोर्टिव है। दे आर वेरी गुड, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू शो अस टाइगर्स, एंड वी हैव सीन टाइगर्स। सो या हमारी जिप्सी आ गई है, और हम अभी जा रहे हैं एट 3 o'clock फॉर ए सफारी राइड। आई एम गोना शो यू दैट टाइगर, स्टे ट्यून। If you choose a safari ride in the afternoon, bring a scarf to cover your face and hair, क्योंकि आफ्टरनून टाइम पे धूल बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। And because we have not seen tiger yet, that is the reason we are waiting in a quiet place कि हमको टाइगर का कोई हिंट मिल जाए। Our driver and guide talk more about Ranthambore and tiger. So let's listen to them out. Hello, cover alone. This zone very is big male area. tiger. What's that? One male tiger. This zone. Oh, one male tiger. 58 number of 58. Name of Rocky. Rocky. Rocky is the name? Rocky name. Male tiger. Four zone Or territory. Oh, he Zone number 6, zone number 8, zone number 7, zone number 10. Big territory. Oh, Maybe come. many wives. Yeah, many wives, 3 wives. 10-12 टाइगर अभी भेज दिए। गायब कहाँ से हो गए? जंगल में ही? गायब क्या, कहीं एमपी निकल गया, कोई धौलपुर निकल गया, कोई लंबा ट्रेक चलते थे, अपना एरिया बनाते हुए निकल जाते हैं। टूरिस्ट मूविंग में जो टाइगर दिख जाता है वो टाइगर पता लगा सकते हो आप। बाकी ऐसे नॉन टूरिज्म एरिया में टाइगर घूम रहा है, उसका फॉरेस्ट वाला देखता है, वो उनकी ट्रैकिंग वो करते हैं उनके हिसाब से। काफ़ी सालों तक उसने यहाँ पे राज किया, एकदम से अचानक गायब हो गया। अब गायब हो गया तो हो गया, वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद में उसको जो है मिसिंग की लिस्ट के अंदर डाल दिया। फेमस टाइगर। उसके बाद बिफोर टाइम। What's that? उसके बाद फतेह फिर बाबा अचानक मेल टाइगर, फेमस क्या हुआ टाइगर, कि फेमस ये हिल है Famous ना, here? बिग टाइगर। Oh, big. इस पहाड़ के ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए He गए just oh, he's फौरदार, dead. तो उन लोगों को कारकस मिला। When was the last हड्डी time मिली a tiger टाइगर killed की। anybody? फिर उस हड्डी को उठाया उन लोगों ने, फिर वो कहीं पर लैब में When a भेजा, tiger killed a और human ये आइडिया लगाया कि यार ये वही टाइगर है 1961 जो मिसिंग है। 1961. 61 लास्ट बुढ़ा होके मर गया था? हाँ? बुढ़ा होके मर गया था? हाँ, एज हो गई थी इसकी। एलिजाबेथ ये जो एक टाइगर को उसने खुद ने मार दिया था, Little baby? एक जवान टाइगर को मार दिया था 61 Oh, उसने। तो उसकी तो एज हो गई थी। वाचिंग। ये लोग कभी कभी फाइट में मर जाते हैं। अभी फतेह तो क्या एज थी फतेह की, एक यंग टाइगर और है यहाँ पे जे करके, एक जे का भाई वीरू था, वीरू को तो इसने मार दिया था फतेह ने।
अब ये भी घूमता है इसी एरिया के अंदर, बहुत बड़ा एरिया है 10 नंबर का। तो इस तरह से लड़के भी मर जाते हैं, और अगर हार जाता है टाइगर किसी से तो भी वो आगे की तरफ चलता चला जाता है वो, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक कि उसको दूसरे टाइगर की स्मेल नहीं मिलती ना, वो फिर आगे निकल जाता है। ईटिंग फूड हाँ, बॉय दूसरे टाइगर की स्मेल मिलेगी तो वो उसको मालूम चलेगा कि इधर भी तो दूसरा टाइगर है। अब या तो उससे लड़ेगा, वो टाइगर नहीं लड़ना है तो गिर जाता है, फिर कोशिश पूरी करते हैं। बात है उसको क्या कुछ सेंसर वगैरह टैग नहीं कर सकते क्या? सेंसर नहीं लगाते। सेंसर क्या वहाँ लगाया जाता है जहाँ टाइगर गाँव की तरफ निकल जाता है, खप जाता है, उसकी ट्रैकिंग के लिए लगाया जाता है, वो डिपार्टमेंट का प्रोसीजर होता है। यहाँ पर एक टाइगर को लगाया था पहले, जो उसमें क्या मैटिंग में दिक्कत आ गई, मैटिंग में नहीं हो पाया, टाइगर से डिस्टर्बेंस कर रहा था वो, तो टाइगर एंगेज हो गई थी, फिर धीरे उसको बंद कर दी। 1-1.5 किलोमीटर का फॉरेस्ट में कैमरे से कैमरा लग रहे थे ना, पेड़ों पे देखे, वो कैमरे में एवरीडे चेकिंग होती है, उसमें फिर फोटो ट्रैप आ जाता है। फॉरेस्ट के अंदर हिलने के लिए लोग घुस जाते हैं। ये 10 नंबर जोन है, बफर जोन है। ये नेशनल पार्क का एकदम हार्डकोर एरिया नहीं, इधर कहीं से भी लोग घुस जाते हैं शिकार के लिए, तो वो फिर वो लोगों को भी सपोर्ट करेगा उस सिस्टम, हंटर को। फिर हंटर भी उसको ट्रेस करेगा, ढूंढेगा और उसको मार देगा। मेरी कोई जानवर आसपास, कोई टाइगर वाइगर, कोई डर रही है, स्मेल आती थी इनको आसपास के 1-1.5 किलोमीटर के अंदर। ये यंग मेल है। While we waited for a clue, all we saw were a few paw prints from a tiger. And I don't know how the guide found out about the location of a tiger and drove the jeep quickly to get there and see this time. This time it completely blew my mind. He was so close to us. Maybe he was resting, possibly after a nice sleep. And we waited for him to stand. And when he did, he was larger than a human being. More like a double or triple, maybe. It was a long wait to see this beast, and completely it is worth the effort. And thank you so much, Ranthambore, for this beauty. हमारा एक सेल्फी लो उसके साथ। When he looked at me, I got goosebumps all over. Oh my god, take a look at him. I felt like screaming from inside, but I shouldn't. All I can say is Ranthambore National Park is paradise for wildlife photographers.
When visiting Ranthambore, you should not miss Rajasthan art and culture. So I went to a new art store called Trinetra because I thought I should buy some good art for my home as a memento. And they have a great collection of paintings, photos, especially of Ranthambore. I would say I was lucky too because we saw tiger both the times and it was a great start of my Rajasthan trip. I'm so grateful that you watched Ranthambore with me. Although I have made every possible to include all the necessary information in the Ranthambore travel blog, but if you have any additional query, please feel free to ask them in the following comment section. Thank you so much for watching Ranthambore with me.